Hi guys, how are you? Myself Kusik Biswa and welcome to my YouTube channel. And today I will discuss about a chapter that is solid state which belongs from 12th class. So 12th class guys, be ready. And those students who wants to learn chemistry, they can subscribe my channel. Now about 350 students perhaps subscribe my channel, but without your love and affection, it's nothing. So guys, let's start. Now I want to speak in Odia. Okay, solid state. So today I will discuss about solid state. So what is the meaning of solid? First of all, we should discuss about the term that is solid. Solid con, it is a property of matter that possess a rigidity and maintain both shape and volume. Solid con, it is a property of matter that possess rigidity and maintain both shape and volume. आमर एग्जांपल हूँ सॉलिड आम आवर डे टू डे लाइफ आम विभिन्न सॉलिड माध्यम आसुचे जमीक क्लास डस्टर सी गोटे सॉलिड एमती विभिन्न जिनस आम देखिए वुड सी गोटे सॉलिड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सो आज आम स्टार्ट करिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सॉलिड आज आम डिस्कशन करिबा सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेफिनाइट शेप गोटे निर्दिष्ट आकार व्हाट इज डेफिनाइट शेप it has a definite shape because the particles in the solid have fixed position and they cannot move from their fixed position. ताले आमे जदि गोटे सॉलिड टाको कंसीडर करिबा सपोज दिस इज a solid and these are the particles in that solid and the particles in that solid are held together by means of strong intermolecular force of attraction. आंको भितर strong intermolecular force of attraction अछि. As a result, they can't move from their fixed position. ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଫିକ୍ସଡ ପୋଜିସନରୁ ମୁଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ସେପ୍ ଥାଏ. ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ. And the next characteristics is definite volume. It has a definite volume because the particles in the solid are closely packed with each other by means of strong intermolecular force of attraction. Same जिनस एठी कौन है ना ना सही सॉलिड रे कौन है ना तांको भितर थिया पार्टिकल गुरा कौन है ना क्लोजली पैक है कि अछंती by means of strong intermolecular force of attraction, so they possess a definite volume. Okay, clear all of you. Okay.
and next is incompressible. What is incompressible? Most of the solids are incompressible in nature because they are very closely packed with each other and hence it is quite difficult to compress. कौन है ना सेई सॉलिड भितर पार्टिकल गुरा कौन है कि अछंती ना गोटे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा हेल्ड है कि अछंती जहाँ फल से कौन दौरान ना गोटे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर दौरान कहीं ना भितर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कौन अच्छी ना अधिका अच्छी तेणुक these are incompressible in nature. Next characteristics is slow diffusion. ये क्या होता है? Solids diffuses very slowly as compared to the liquid and gas. Why? Because the solids are fixed in their position and can't move from their fixed position. Solid मानकर से एका जिनस solid मानकर पार्टिकल गुरा जेहेतु इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बॉन्डिंग होइचंती तेणुकर से निज निजर पोजिशन में फिक्स्ड अछंती तेणुकर से निजर पोजिशन को कौन करि ना चेंज करि पारंती नाही आ जदि गोटे हम सॉलिड के हम किछि हीट दबा से कौन करिवे ना स्लाइटली किछि मेल्ट करिवे जो माने मेल्टिंग सॉलिड से कौन करिवे ना किछि स्लाइटली से मेल्ट करिवे मेल्ट कला फल रे कौन हेबे ना से निज निज पोजिशन कौन हेबे ना किछि बाट को चली which is called as slow diffusion which is called as slow diffusion and next is classification of solids. Classification of solid. Depending upon the nature of the solid, the solids are classified into two types. First one is crystalline and second one is amorphous. So first I will discuss about crystalline. So what is the meaning of crystalline? Crystalline solid होची हमर एपरी एक solid जहाँ भितर पार्टिकल गुड़िक कौन थे ना गोटे ऑर्डरली अरेंज होगी थे केम थे ना से माने ऑर्डरली अरेंज होगी थे इन दिस सॉलिड द पार्टिकल्स लाइक एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन ए डेफिनाइट ज्योमेट्री व्हिच इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड ताले क्रिस्टलाइन सॉलिड रे हमर पार्टिकल गुरा ऑर्डरली अरेंज होगी थांती जेतबेले आमे ताकू गोटे छुरी द्वारा काटिबा सेमाने कौन करती ना गोटे प्रॉपर शेप देबे सेमाने कौन देबे ना गोटे प्रॉपर शेप देबे when we used to cut in a knife then it will give a proper shape. So these are the crystalline solids. And next one is amorphous. In this solid the particles are not arranged in a proper manner. जेपरि कि आमे जदि गोटे सॉलिड नवा क्रिस्टलाइन सॉलिड रे हमर ऑर्डरली अरेंज होगी थिले जदि ताको हम गोटे छुरी द्वारा काटिबा सेमाने गोटे प्रॉपर शेप दोथिले बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड तार पार्टिकल गुड़िक ऑर्डरली अरेंज होगी न थांती एणे तेणे होगी थांती जेतबेले आमे ताकू भांगिबा बा ताकू छुरी द्वारा काटिबा सेमाने आइदर एमिति स्प्लिट करि पारंती आइदर एमिति स्प्लिट करि पारंती आइदर एमिति भी स्प्लिट करि पारंती बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सेची कोन होबो ना जदि आमे भांगिबा सेमाने आइदर एमिति गोटे रेगुलर कट दे पारंती बा आइदर एमिति भांगी पारंती बा आइदर
एमिति भांगी पारंती. So these are the crystalline and amorphous solids. Okay. Crystalline solids, they possess sharp melting point and boiling point. उसका तार एग्जांपल होची NaCl, ammonium chloride, NH4Cl, etc. Amorphous, they possess low melting point and boiling point as compared to crystalline solid. As compared to crystalline solid. तार एग्जांपल होची ग्लास, प्लास्टिक, coal, etc. These are the examples of amorphous solid. Okay. And then I will discuss about what are the main differences between crystalline and amorphous solid. Its first point is in crystalline solid the particles are arranged in a definite or regular order which extends throughout the crystal in a long order. ये कौन ना क्रिस्टालाइन सॉलिड रे पार्टिकल गुरा ऑर्डरली अरेंज होगी थांती गोटे रेगुलर ऑर्डर रे थांती जोटा कि एक्सटेंड करे थ्रू आउट द क्रिस्टल इन ए लॉन्ग ऑर्डर. ओके. जदि आमे ताकू आमे पार्टिकल गुड़िक सॉलिड रे हमर क्रिस्टालाइन सॉलिड रे हमर एही परि भाବରେ थांती जहाँ फल से गोटे लॉन्ग ऑर्डर मेंटेन करी जाती. ओके. But in case of amorphous solid, the particles are not arranged. Particles are not arranged in a definite regular order, which extends throughout the crystal over a
short range order. ओके एମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଲିଡ୍ ଭିତରେ ତାର ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ରରେ ନଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସୋ ନେକ୍ସଟ they have sharp melting point and boiling point. They have sharp melting point and boiling point. They, in case of amorphous solid, they don't have sharp melting point or boiling point as compared to crystalline solid. Okay, next କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା କାଟିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସେପ୍ରେ କଟିବେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସେପ୍ରେ କଟିବେନି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ସେପ୍ ଦେବେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ସେପ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା the particles in that solid are not arranged in a regular manner. Okay, so the surface of the cleavage means ଭାଙ୍ଗିବା, cleavage is plain and smooth when they cut with a knife. amorphous ରେ କ'ଣ ହବ, but in case of amorphous the surface of cleavage is irregular when cut with a knife. Next point is it is symmetric in nature. समान, it is symmetric in nature. It is unsymmetric in nature. ताले सॉलिड गुरु का हमर सिमेट्रिक इन नेचर, एमान हला कोन अनसिमेट्रिक इन नेचर. सो नेक्स्ट it exhibit an isotropy. କହିବି ବିଷୟରେ an isotropy. But in case of amorphous it exhibits isotropy. It exhibits isotropy. Okay, so what is the meaning of isotropy and what is the meaning of anisotropy? So first I will discuss isotropy. Isotropy कौन? Isotropy कौन? Now its definition is the substance which have some physical properties like electrical conductivity, refractive index, thermal conductivity, etc.,
are same in all directions are called isotropic substances. So what is isotropy? The physical properties, ताहले आमे जेतबेले गोटे सॉलिड भितरे बा गोटे सॉलिड रे आमे कोन करिवा ना इलेक्ट्रिसिटी दवा बा इलेक्ट्रिक करंट दवा बा तार इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पावर आउ कोन ना तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ तार थर्मल कंडक्टिविटी मींस टेंपरेचर दे के तो हम हीट करिवा माने को डायरेक्शन से माने गति करिवा माने हला कोन तार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्मल कंडक्टिविटी in all the directions are same. जदि आमे एकड़े आमे गोटे इलेक्ट्रिसिटी दबा बा एकड़े आमे थर्मल कंडक्टिविटी बा एकड़े आमे कोन करना तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिटरमाइन करिवा ताले सबु जांक डायरेक्शन ने तार वैल्यू गुडी को कोन हबो ना सेम हो तार वैल्यू गुडी को कोन हबो ना सेम हो व्हाई because they are arranged in a particular order. So the physical quantities like electrical conductivity, refractive index, thermal conductivity are same in all the directions. So these are called isotropy. These are called isotropy. So what is anisotropy? Anisotropy means the physical quantities like refractive index, thermal conductivity or electrical conductivities, these are different in different directions. ताल जदि आमे गोटे amorphous solid टे नबा ता भितर पार्टिकल गुडी को ऑर्डरली अरेंज हेक न थांदी पार्टिकल गुडी कोन थांदी ना ऑर्डरली अरेंज हेक न थांदी जेतबेले एकड़े आमे हीट दबा बा एकड़ जदि आमे कोन दबा ना इलेक्ट्रिसिटी दबा सेतबेले कोन हबो ना आंकर जो डिफरेंट वैल्यू मिलिबो ना different direction. They have different values in different directions. So these are called anisotropy. काहेकि हमने different value दोचंदी because the particles in that solid are not arranged properly. So these are different in different directions. Okay. Okay. Thank you. जय जगन्नाथ. Bye.